Good morning and welcome back, student. I am your teacher, Hina Sheikh. Today, we are going to learn our next subject, that is geography. Chapter number 2, the sun, the moon, and the earth. Before we start, let's discuss the learning objectives and keywords of this chapter. So, today we are going to learn about axial and orbital motion of the moon, perigee and apogee position of the moon, and waxing phase and waning phase of the moon. So, student, let me introduce the celestial object that we observe in the sky. Celestial means object that we observe in the sky. So, student, what you observe in the sky? We observe the sun. Let's see this in detail. Sun is heart of our solar system. This sun, student, is more than 100 billion stars in the Milky Way galaxy. Can you know it holds 99.8% of the solar system mass. Student, its diameter is 109 times bigger and about 1 million Earth can fit inside the sun. Now, next, what we see in the sky? The earth. Let's see. What is earth, student? Earth is our home. The planet in which we live. जो planet पे हम रहते हैं student, उसको क्या बोलते हैं? Earth. Earth is a third planet from the sun. Student, Earth is the only planet known to have atmospheric condition, free oxygen, ocean of water on its surface and of course लाइट. अर्थ ही स्टूडेंट ऐसा प्लानट है जहाँ पे हमको फ्री ऑक्सीजन मिलती है. वी कैन सी ओशन ऑफ वाटर एंड लाइट. वी सी लार्ज नंबर ऑफ बायोडाइवर्सिटी, दैट इज प्लांट लाइफ एंड एनिमल लाइफ. स्टूडेंट, अर्थ इज द फिफ्थ लार्जेस्ट प्लानट इन द सोलर सिस्टम. हमारे सोलर सिस्टम का फिफ्थ लार्जेस्ट प्लानट है अर्थ. Earth gravity intersect with other objects in our solar system. So next we see the moon. What is moon? The moon is an astronomical body. Astronomical means also related to celestial body. This astronomical body orbiting the earth and this moon, student, it is the only natural satellite of the earth. Earth is the fifth largest satellite in the solar system, right? So student, this is all about the sun, the moon and the earth. Now let's learn about the phases of the moon and the motions of the moon in detail. The moon's motion. I will read this paragraph and then I will explain you in detail. The moon's motion. Like the earth, the moon also has axial and orbital motion. The moon, while rotating around itself, revolves around the earth and earth revolves around the sun. As a result, though the moon does not revolve around the sun independently, indirectly it makes revolution around the sun. The time it takes to make one revolution around the earth
and one rotation around itself is the same. That is why we constantly see one and same side of the moon. Now let's see the explanation. Student, like the earth, moon also has its axial and orbital motion. Now what is axial motion, student? Let's see this first. We know that earth rotate around its own axis. ये मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में एक्सप्लेन किए थे, राइट? Earth rotate around its own axis. Similarly, student, moon also rotate around its own axis. Moon भी अपने own axis के rotate होता है. So, the motion of the moon around its own axis is called axial motion. Understood, student? Axial motion. Now next is orbital motion. The moon while moving around its axis, देखो अभी अपने एक्सिस के मूव होने के अलावा it also revolve around the earth and this is called orbital motion. The moon orbit, student, is quite fast. It moves around 0.5 degree per hour. So how much it revolves in 24 hours, student? It moves at about 13 degree. Okay. So student, the moon revolve around the earth and earth revolve around the sun. As a result, though the moon does not revolve around the sun, it indirectly revolve around it. And that is why what happened? We constantly see one and same side of the moon. हमको constantly क्या दिखता है student? सिर्फ moon का एक ही side. Understood? Now let's see the apogee and perigee position of the moon. What is perigee position? Let's see. Student, observe the given diagram. Okay. While moving around the earth, the moon comes closer to the earth. Listen student. जब moon earth के round लगाएगा, it is very close to the earth. And when this moon is close to the earth, you can see that in the diagram student. moon एक side में देखो, moon earth के क्या है, बहुत close है. So when the moon is very close to the earth, it is said to be a perigee position. Understood student? It is very easy. When moon is close to earth, it is said to be which position? Perigee position. Now when moon is close to the earth, the distance between the earth and the moon during this perigee position is 3,56,000 kilometer. Now next is apogee position. What is apogee position student? इसका opposite. While revolving around the earth, the moon is far away from the earth. अब moon क्या है student? earth से बहुत दूर है. Look at the diagram student. Next side देखो, moon earth के क्या है, बहुत दूर है. So when moon is far away from the earth, it is called which position student? Apogee position. And student, during this apogee position, the distance between earth and moon is 4,07,000 kilometer. कितना होगा? 4,07,000 kilometer. Now student, let's discuss the effect of apogee and perigee position of the moon.
एपोगी और पैरेगी पोजीशन का इफेक्ट क्या होगा, लेट डिस्कस दिस. स्टूडेंट, imagine that you are standing on a seashore or a beach. Student, look at that picture also and imagine कि आप लोग कहाँ पर खड़े हो, सी शोर और बीच के पास. बीच पता है ना आप लोगों को, आप लोग वहाँ पे खड़े हो, आपको इमेजिन करना है. नाउ what will you observe if you stay near a seashore, student? You will observe or you will realize that when seawater is close to us or close to the coast, what happened, वो हमको जब वेव्स हमारे पास में आते हैं स्टूडेंट, तो व्हाट हैपन, वो हमको अपनी ग्रेविटी, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी इट पुल अस, राइट. ऑन द अदर साइड स्टूडेंट, व्हाट वी सी, व्हेन द वेव्स आर फार अवे फ्रॉम द कोस्ट, जब वेव्स वापस चले जाते हैं, वी द वेव्स आर स्टिल. अंडरस्टूड. सो स्टूडेंट, while on the other side it is far away from the coast. So student, this movement, ये जो movement है सी वाटर का, okay, it is known as tide. What is known as tide? Student, this apogee position and perigee position have an effect of tide. Tide का effect किस पे होता है, apogee और perigee position पे. Understood? Both earth and moon, student, pulls each other. Now say student, earth और moon दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को पुल करेंगे. क्यों? बिकॉज ऑफ ग्रेविटी. ग्रेविटी मीन्स फोर्स. व्हेन द मून इज फार अवे फ्रॉम द अर्थ, अब यहाँ पे देखो, अब जब मून अर्थ से बहुत दूर होगा, तो एट दैट टाइम वी ऑब्जर्व लो ग्रेविटेशनल फोर्स. वो टाइम पर ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा होगा, लो होगा, एंड वी ऑब्जर्व लो टाइड्स. Similarly student, when moon is close to the earth, there will be more gravitational force, and then time we observe high tide. Understood student? मून अगर दूर होगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी लो होंगी, मून अगर नज़दीक होगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी कैसी होंगी, ज़्यादा होंगी. सो दीज आर द इफेक्ट ऑफ एपोगी एंड पैरेगी position on tides. Now let's see the next is waxing and waning phase of the moon. Sometimes student, we see brighter moon in the sky, but it does not have its own light. It looks brighter because the light of sun which heat it and bound it out. In simple words, we can say the moon looks bright because of reflection of sun. Now student, let's discuss the waxing moon first. Waxing means student low. Okay. Now see, the cycle of lunar phase begin with new moon. See student, ये जो वैक्सिंग फेस है, वैनिंग फेस है, ये कब स्टार्ट होगा, न्यू मून से. एट न्यू मून स्टूडेंट व्हाट हैपन, द मून अपीयर completely darker because the another side is facing to move to its orbit. Okay, we can able to see some side of the moon from the earth. Student, see, waxing moon में what happened, we cannot able to see the moon. moon क्या है, पूरा स्काई में बादलों में छुप जाता है. Okay, and then what happened student, slowly every night, okay, its position, its size grow thicker every night until it reaches to its first quarter. First quarter means half. On that day student, half of the moon is illuminated to us
As the day passes, student, the moon continues to grow. Soon it comes to its next phase, that is waxing. Waxing means large. ओके सो स्टूडेंट वैनिंग मीन्स लो लो यहाँ पर हमको मून सबसे पहला क्या होगा पूरा डिसअपियर होगा देन स्लोली स्लोली एवरी नाइट व्हाट हैपन वी कैन सी सम पार्ट ऑफ द मून देखो ईद के टाइम पे तुम लोग ने देखे होंगे ये चांद सा रिंग की तरह दिखता है राइट तो उसको बोलते हैं वैक्सिंग मून क्या बोलते हैं उसको वैक्सिंग मून वैक्सिंग मीन्स मून की साइज कैसी होती है लो होती है वैक्सिंग में अंडरस्टूड स्टूडेंट नाउ विल सी द वैनिंग मून और वैनिंग फेज स्टूडेंट कैन यू सी द फुल मून आप लोगों ने फुल मून ऑब्जर्व किए हैं कभी देखे हैं फुल मून इज द बिगेस्ट brightest and easiest phase of the moon we see from the earth है ना हम देख सकते हैं फुल मून को इजीली जब स्काई क्लियर होगा तो वी कैन इजीली सी द फुल मून by standing outside our balcony now students see the moon continue to revolve around its path it appear to shrink again अब देखो स्टूडेंट वैक्सिंग मून में हम वी सी द फुल मून अब व्हाट हैपन स्टूडेंट दिस मून ओके दिस साइज ऑफ द मून कंटिन्यू टू श्रिंक श्रिंक मीन्स अब इसकी साइज फिर से क्या हो रही है कम हो रही है मीन्स फिर से वो कहाँ पर जा रहा है वैक्सिंग फेस में जा रहा है लॉस हो रहा है राइट again it become smaller and smaller the position of moon become quartered then one day you will see again the size of the moon is like a ring shape okay after this student the moon come again to its waxing phase it means it continue to shrink night after night till it completely disappear in the sky and come to its next new moon means अब यहाँ फिर से क्या हो जाएगा मून फिर से स्काई में डिसअपियर हो जाएगा मीन्स पूरा तरह से बादलों में छुप जाएगा और फिर से इट कम्स टू इट्स नेक्स्ट पोजीशन नेक्स्ट फेज दैट इज वैक्सिंग फेज सो स्टूडेंट ये वैक्सिंग और वैनिंग ये साइकिल जो है इट कीप्स ऑन रोटेटिंग ओके वैक्सिंग से वैनिंग देन अगेन वैनिंग से इट कम्स टू वैक्सिंग सो स्टूडेंट नेक्स्ट टाइम when you observe the moon what you will going to do try to identify which phase of the moon you are observing okay आप लोग किस कौन सा फेज देख रहे हो whether it is waxing है या waning है वो आप लोगों को मुझे बताना है understood student so what we have learned today motions of the moon perigee position apogee position waxing phase means low size of the moon waning phase again the moon become bigger okay this we have learned today now student let's have a quick review of what we have learned so let's discuss some exercise question number 1 fill in the blanks first one a situation when the moon disk is partially covered is called dash lunar eclipse. It is called partial lunar eclipse. Second, a solar eclipse can occur only on a dash moon day. Answer is new moon day. जब मून पूरा डिसअपियर हो जाएगा स्काई में ऑन दैट डे यू विल सी विच एक्लिप्स स्टूडेंट सोलार एक्लिप्स दिस you will see in the next lecture. Third one, a lunar eclipse can occur only on a dash moon day, on a full moon day. Question number 2. Correct the wrong statement and write down the corrected ones.
First one, the moon revolves around the sun. Is it right, student? No, it is wrong. The moon always revolves around the earth. It's indirectly revolve around the sun, but actually it revolves around the earth. Next one. On a full moon day, the moon, the sun and the earth are positioned in this sequence. Means हमको बताना है फुल मून डे के दिन पोजीशन कैसी होंगी. So student, on a full moon day, the moon, the sun and the earth are positioned in full moon. Means moon is disappear, we cannot see the moon. तो पोजीशन कैसी होंगी स्टूडेंट? फर्स्ट विल बी सन, देन मिडल में होगा अर्थ एंड देन मून. ये सीक्वेंस होगा. ओके. थर्ड वन, the revolutionary orbit of the earth and the moon are in same plane. Is it right? No, wrong. The revolutionary orbit of the earth and the moon are not in the same plane because it makes an angle of 5 degree with that of the earth. सेम नहीं होंगे बिकॉज क्योंकि इट ऑलवेज मेक्स एन 5 degree एंगल. ओके. फोर्थ वन, इन वन revolution of the moon its orbit intersect the earth orbit only twice. Only once. It is wrong. In one revolution of the moon it orbit always intersects twice. कितने टाइम पे इंटरसेक्ट होगा? एक रिवोल्यूशन में मून का ऑर्बिट 2 times. ओके. फिफ्थ वन, इट इज ऑल राइट टू ऑब्जर्व सोलर एक्लिप्स विदाउट प्रोटेक्टिंग द आईज. स्टूडेंट, ग्रहण पता है ना आपको? ये हम लोग बिना हमारे आईज प्रोटेक्ट करके देख सकते हैं क्या? नो. आंसर इज रॉन्ग. So right answer is, it is harmful to observe solar eclipse without protecting the eyes. While observing, जब भी हम solar eclipse देखेंगे, it is necessary to view the sun disk through dark glasses. We have to wear dark glasses or special goggles made for that पर्पज़, जो सिर्फ ग्रहण देखने के लिए बने हुए हैं. हमको वैसे गॉगल्स और डार्क ग्लासेस वी हैव टू वेयर. सो स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट द सेकेंड चैप्टर. सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू.